Assalamu alaikum dear students. Today our topic is noise pollution. आज का हमारा मौजू है noise pollution. तो इसमें हम बात करेंगे what is the meaning of noise pollution, meaning of noise, and what are the causes or source of noise pollution. Dear students, as you know, man is living in an increasingly noisy environment. The present century or the 21st century has been described as the century of noise. Noise has become a very important stress factor in the environment of man. In the big cities, industrial towns, and digested areas, there is a serious problem of noise pollution. Human brain can tolerate noise only up to a certain limit. Dear students, ये जो प्रेजेंट सेंचुरी चल रही है 21st सेंचुरी, इसको डिस्क्राइब किया गया है सेंचुरी ऑफ नॉइज. यानी इस सेंचुरी में आई कैन से जो नॉइज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है. नॉइज पोल्यूशन मीन्स जब हमारे एनवायरनमेंट में नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा होता है, तो हम उसे नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं. और ये जो नॉइज़ पोल्यूशन है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, स्पेशली इन मेन टाउन्स या बिग सिटीज़ या इंडस्ट्रियल टाउन्स में. वहाँ पे ये जो नॉइज़ है मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. अब हम देखिए मीनिंग ऑफ नॉइज़ किसे कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे पॉपुलर मीनिंग ऑफ नॉइज़. नॉइज़ इज ऑफ्टन डिफाइंड एज अनवांटेड साउंड, बट दिस डेफिनेशन इज सब्जेक्टिव बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वन मैनर्स साउंड इज अनदर मैनर्स नॉइज़. उसके बाद जो नेक्स्ट दैट इज बेटर मीनिंग. नॉइज़ इज रॉन्ग साउंड इन द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम. जो सबसे अच्छी डेफिनेशन है नॉइज़ की, बात हो रही है नॉइज़ की, शोर की. शोर किसे कहते हैं? नॉइज़ इज ए रॉन्ग साउंड इन द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम. मीनिंग ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. Dear students, the term noise pollution has been recently coined to signify the vast cacophony of sounds that are being produced in the modern life, leading to health hazards. Right? तो हम समझ गए हैं मीनिंग ऑफ नॉइज किसे कहती है या नॉइज पोल्यूशन किसे कहते हैं. यानी जिससे इंसान के सेहत को खतरा पहुंचता है, लाख खतरा पहुंचता है, तो उसे हम नॉइज पोल्यूशन कहते हैं. यानी जिस नॉइज से, जिस शोर से, जिसका कोई मतलब ही नहीं हो, जिसका कोई मकसद ही ना हो, जिसका कोई, तो हम उसे नॉइज पोल्यूशन कहते हैं. अब हम देखेंगे व्हाट आर द कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन. डियर स्टूडेंट्स, द सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर मैनी एंड वेरिड. दीज आर रोड ट्रैफिक, factories and industries, aircrafts, loudspeakers, domestic noises from the road radios, transistors, televisions, stereo systems, lawn mowers, power tools, etc. तो सबसे पहले हम यहाँ डिफाइन करेंगे यानी कॉज, जो मेन कॉज है नॉइज़ पोल्यूशन का. नॉइज़ कहाँ कहाँ से आता है हमारे इस माहौल में. तो फर्स्ट है रोड ट्रैफिक नॉइज़. Dear students, the main causes of road traffic noise in the city are automobiles, trucks, buses, and bikes. This type of noise can be augmented by narrow streets and tall buildings, which produce a canyon in which traffic noise reverberates. यानी जो फर्स्ट नॉइज जो आता है, शोर कहाँ से आता है? रोड ट्रैफिक से. ठीक, अगर हम देखेंगे स्पेशली अगर हम बिग सिटीज़ की बात करेंगे या टाउन्स की बात करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा शोर होता है. यानी आई कैन से जो ये शोर कहाँ से आता है? ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों का शोर, ट्रक्स का शोर, बसेस का शोर, बाइक्स का शोर,
यानी बिल्कुल हर तरफ से शोर ही शोर आ रहा है, और जिससे क्या होगा, यानी इंसान इंसान की सेहत पर ये बुरा असर डालती है। उसके बाद जो शोर कहाँ से आता है, नॉइज इन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। डियर स्टूडेंट्स, although industrial noise is one of the less prevalent community noise problems, neighbors of noisy manufacturing plants can be disturbed by sources such as fans, motors, and compressors mounted on outside of buildings. Interior noise can also be transmitted to the community through open windows and doors and even through building walls. These interior noise causes have significant impact on industrial workers, among when noise induced hearing loss is unfortunately common. और जो दूसरा शोर आता है वो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से आता है, यानी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, तो वहाँ से भी शोर आता है। यानी वो जो मतलब वो आई कैन से वो जो माइक लगाते हैं आउटसाइड द बिल्डिंग, तो वहाँ से जो उनके नाइबर्स होते हैं, यानी जो इन बिल्डिंग्स आई कैन से जो इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो इसके नाइबरिंग आई कैन से जो उनके नाइबर में रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचती है। उसके जो बाद जो नेक्स्ट हुआ है एयरक्राफ्ट नॉइज़। Dear students, nowadays the problem of low flying military aircrafts has added a new dimension to community annoyance as the nation seeks to improve its map of the earth aircraft operation. Our national parks, wilderness areas and other areas previously unaffected by aircraft noise has claimed national attention over recent years. और जो एक शोर कहाँ से आता है, एयरक्राफ्ट से आता है। आजकल अगर हम देखेंगे ये जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं या अदर ये जो मतलब हवाई जहाज़ होते हैं, तो वो उनकी जो उड़ान होती है वो बिल्कुल बहुत कम उड़ान पे वो उड़ते हैं, तो इससे भी क्या होता है, उनका जो शोर होता है वो हर एक को सुनाई मतलब देता है। उसके बाद है नॉइज़ फ्रॉम रेल रोड्स। डियर स्टूडेंट्स, द नॉइज़ फ्रॉम लोकोमोटिव इंजन्स, horns and whistles, and switching and shunting operations in railroads can influence neighboring communities and railroad workers. For example, rail car retarders can produce a high frequency, high level screech that can reach peak levels of 120 dB at a distance of 100 feet, which translates to levels as high as 138 to 148 dB at the railroad या रेल रोड वर्कर्स कार। यानी रेल स्टेशन होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये जो ट्रेन्स होते हैं, उनकी जो हॉर्न्स होते हैं, उनकी जो सीटें बजती हैं, उससे भी मतलब नॉइज़ प्रोड्यूस हो जाता है और ये नॉइज़ पोल्यूशन बन जाता है। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन नॉइज़। Dear students, the noise from the construction of highways, city streets and buildings is a major contribution to the urban scene. Construction noise sources include hammers, air compressors, bulldozers, loaders, dump trucks and pavement breakers. So these are some sources of noise pollution. Thank you. Have a nice day.